इसमें शायद शेयर का नहीं आ रहा होगा. The same screen is being shared. Actually, I don't know how to share this. Can you see this presentation? No, ma'am, your presentation is not visible to us. It's हम अपना ही reflection देख रहे हैं. आप stop share हाँ करके हाँ वही आ again रहा screen है. share पे जाएंगे तो window आपको मिलेगा जिसमें आपका PPT होगा. तो you select हाँ जी, हाँ particular window which you want to share. हाँ, दोबारा stop करके yes, you open it, screen share. Multiple windows will be there. Yes, yes. Yes, तो select particular one जो आपको share करना है. हाँ अभी आ गया है. It is when I refreshed it, then it is reflecting. Yeah, it is visible now, ma'am. Yes. Right. Thank you so much. So actually, this leadership is the topic which is being assigned to me is effect of school leadership on students' learning. So actually, this school leadership for students' learning is one of the area where which is very much pertaining. Like every educational institution is supposed to give maximum to their students, and to give maximum to their students, everyone is working on it. Like every university, every school, every colleges. जैसे हम कॉलेज में जाते हैं या हम स्कूल्स में जाएंगे तो स्कूल में टीचर्स जो आते हैं वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही आते हैं. And whatever the person is being taught become the teacher of a school. So every teacher, I personally feel that every teacher is a leader of its own class, and slowly and gradually it becomes the leader of a school. So leader means, जैसे हम leader एक word कहेंगे तो हम सोचेंगे कोई politician है. लीडर मतलब हमारा जो एक अपना नेटवर्क है, हमारा जो अपना एक ग्रुप है, हम उसके लीडर हैं एक्चुअली. मतलब हम उसको लीड कर रहे हैं. सपोज मैं क्लास में जाती हूँ तो आई एम द लीडर ऑफ माय क्लास. It is a very small concept of a leadership, which I personally feel that I'm the leader of my class. So this is one of the good opportunity to speak or to talk or to share my views with the leaders, school leaders. And here the school leaders means the principals of the school actually, because they are the policy makers. They are the actual person who is giving direction to rest of the people. Every teacher, every student is looking to the principal, to the system of the principal, to the curriculum design which is being designed by the principal. डायरेक्टली कोई प्रिंसिपल उस करिकुलम डिजाइन का पार्ट हो भी सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है. चूंकि हम स्कूल के करिकुलम की बात करते हैं तो जैसे सीबीएसई में सीबीएसई एक करिकुलम बनाता है और एनसीईआरटी उस करिकुलम पे बुक्स बनाती है. एनसीईआरटी यूजुअली करिकुलम नहीं बनाती है. अगर उसे कोई इनपुट देना है तो वो करिकुलम डिजाइनर्स को यानी कि सीबीएसई को अप्रोच करता है कि दिस कैन बी एडेड इन योर करिकुलम एट दैट पर्टिकुलर लेवल. जैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, अब ये सब स्कूल्स में आने लगा है. तो ये एनसीईआरटी ने सीबीएसई को कहा. सीबीएसई ने इसका एक मैनुअल भी बना के निकाला है. इसके साथ साथ एनसीईआरटी ने भी कुछ स्कूल्स, कुछ क्लासेस के लिए, क्लास 7th 8th एंड 9th के लिए उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पे एक छोटा सा सिलेबस और एक मैनुअल निकाला है. तो स्कूल लीडर का मतलब यहाँ पर है स्कूल के प्रिंसिपल, जिसके ऊपर सबकी नजर रहती है. और सबकी नजर रहने का मतलब ये है कि हर पर्सन जो भी उस स्कूल का है, means every person or the school fraternity is looking the school leader actually, school principal actually. So who is this school principal here? Who is supposed to be a school principal? The person who is having a big experience. As Dr. Rajni has told me that many of the teachers are not getting duty leave for attending this program, but still for enhancing their skill, they are attending the program. Maybe they do have some other work also. In the same way, when I'm heading the department, there are around 350 students जो आप स्कूल के एक प्रिंसिपल के सामने बहुत कम होते हैं. उनके आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, आपके 1000 2000 6000 बच्चे भी हो सकते हैं. मेरे डिपार्टमेंट में 350 बच्चे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत हैं एक्चुअली. तो बिकॉज दिस मच नंबर इज नॉट देयर इन अदर डिपार्टमेंट. सो स्कूल principals are also having so much other work
even when I'm giving the lecture, I just put my room lock so that hassle free I can give it, deliver something which I could share with you. मैम So there is only सॉरी, one. सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपका ना पीपीटी शायद जूम आउट करके आ रहा है, बहुत पूरा मटेरियल दिख नहीं रहा है। तो यस, वो या सिलेक्ट हो गया है या तो पर्टिकुलर, या अभी दिख रहा है? मैम पूरा नहीं दिख रहा है, या तो विंडो मिनिमाइज हो गया है या कैसे है। एक मिनट में देख लेती हूँ। अभी नजर आएगा? मैम नहीं, स्टिल हाफ। आई थिंक दिखना चाहिए, मेरे सिस्टम पे तो दिख रहा है। मैम अभी ठीक है, सो आप इसको अगर F5 ना करें, ऐसे चलेगा तो पूरा भी दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू। राइट राइट राइट। So this is what actually the school leadership or the students are looking to their leaders actually. So when we talk of the leader, maybe the leader means here the principal of a school, or leader means head of the department, or anyone who is leading a certain number of groups, which include students as well as the teachers. So leadership is not a gender specific. It could be sir or madam. When in the year 2005, I joined first time as a principal in one of the college, and at that time, many of the people were calling me like a sir, sir करके ही मुझे introduce करते थे. तो मैंने कभी किसी को टोका भी नहीं, मैंने कहा ठीक है, आदत पड़ गई है, क्योंकि लेडीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कई बार नहीं करते हैं. But this doesn't happen in my case. Maybe it may maybe the working style which I'm having here. So it is not a gender specific, it could be anyone. Leadership is nurtured with the age and experience, and leadership can be developed through mentoring and training. So by age and experience, leadership is being nurtured, means after certain period of time, when you have completed like 8 years or 10 years, whatever the minimum requirements as per the recruitment policy, you have been recruited as a, or we have been recruited as a principal of that school or that institute or a college or at a university system. So after certain period of time only, so what is this certain period जो of का तो time? 60 है, 7 से 15 है ही नहीं वो. तो ये जो इतना पीरियड होता है टाइम का, उसमें हम डे बाय डे एवरी टाइम आई डू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. Like I'm having an experience working under some principal, I'm having the experience with handling the students not only in the class but also after the class, also during the co-curricular activities, and I'm having the experience of many other things also. So before becoming a leader, I was working as a normal or a general faculty or general teacher. So when we talk of the leadership, I mean, the principal knows that what are the difficulties faced by a teacher, or a teachers are facing the difficulties. So every leader knows this particularly. Every leader has worked at a very ground level. Say I'm now heading the department, so I'm teaching also, but I'm not teaching in most of the classes. I'm having 10 lectures in a week, so I'm taking only 10 lectures. Sometimes 11 or 12 lectures I do take. But as per the norms, I'm taking 10. But I'm not handling every class. But when I was an assistant professor, or when I was not heading the department, at that time I am handling many more students in a face-to-face manner for teaching learning process actually. So I actually know that what kind of problems are there, or what kind of challenges which a teacher face, what kind of challenges which a student face, because most of the students are not approaching to their principal or to their leader for pity problems or challenges whatever they are facing. They do not approach to their leader. But when somebody becomes a leader, they have been working at a very ground level in a face to face manner in an actual classroom situation. They have already worked.
so they know how to handle, how to discuss with the students. So leaders perform various roles such as planning and implementing, evaluating, monitoring, controlling, motivating, managing conflicts, organizing task groups, mobilizing human and financial resources, and above all, setting an example to the group. कितना सारा काम, कितना सारा लग रहा है ना, करना पड़ता है. Because leader is like, or a principal is like that he has to do everything. And the ultimate goal is only two. Ultimate goals are two. Number one, the student's achievement, and number two is the student's satisfaction for their vocational skills, for their vocations. I mean, every teacher or every principal look forward that their students may get some good job, or maybe if they are doing certain kind of business, then their business will flourish. So these are the two motives only, and for these two motives, the leader or a school principal work for a good planning, and then whatever we have planned, say national education policy is being implemented, so or it is being there in an existing form, so that is the planning. So now we need to implement it. So planning needs to be implemented at every time and every stage. Then evaluating, और इससे भी खाली काम नहीं चलेगा, फिर मॉनिटरिंग. अब इवैल्यूएट जैसे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमारा आया, तो हमने ये क्या देखा कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो बहुत अच्छे तरीके से आ गया. उस डॉक्यूमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में बहुत कम लोगों ने अडॉप्ट किया, और कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स पहले से ही अडॉप्ट कर रखा था उन्होंने इंटरनल प्रोग्रेस के लिए. उनका प्राइवेट स्कूल्स का क्या होता है, उनके दो मोटिव होते हैं. पहला, अधिक से अधिक बच्चे उनके यहाँ आए, और दूसरा कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट सभी से अच्छा हो, मतलब गवर्नमेंट से भी प्राइवेट से भी. गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल या गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स का एक मोटिव होता है कि उसका स्टूडेंट एक अच्छी जॉब ले ले. जो मैंने पर्टिकुलरली फील किया है, उसको इस बात से मतलब नहीं होता. कई बार मैं भी अपने बच्चों को कहती हूँ कि 90 में से 100 में से 90 मार्क्स लाना ठीक है, अगर आपके 75 आते हैं तो भी ठीक है. अल्टीमेटली यू हैव टू सक्सेस, यू हैव टू compete at a certain group where on the basis of the competition you will be getting a job. अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए भी कॉलेजेस में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में रिटन टेस्ट होने लगा है, एंड आफ्टर रिटन टेस्ट ओनली 10 students are coming for the this one interview. और इंटरव्यू के नंबर भी इतने कम रखे हुए हैं कि अगर किसी ने उसमें टॉप किया है और हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, मतलब टॉप करने का मतलब सिर्फ सबसे अधिक नंबर लाना नहीं है. 100 नंबर का पेपर है तो 90, 92, 93 ऐसा कुछ नंबर लेके आया है, तो इंटरव्यू में आप उसे कितना भी कम देंगे, 50% से आप कम बहुत ज्यादा दे भी नहीं सकते, तो भी उसका सिलेक्शन कंफर्म ही हो जाता है. तो अभी ऐसा ऐसा भी चल रहा है. देन वी टॉक अबाउट मॉनिटरिंग. What this monitoring is actually, we have planned, we have asked our faculty members to implement it, evaluate accordingly, but we need to monitor at every step. Because like continuous comprehensive evaluation क्यों फेल हो गया, वो दो कारण से फेल हुआ. पहला कि शुरू में तो समझ ही नहीं आया क्या है. अब जैसे आपको को ट्रेनिंग मिल रही है, तो बाद में फिर दूसरा क्यों फेल हो गया, क्योंकि एक नो डिटेंशन पॉलिसी थी कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है. तो अब उसके कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में अगर इवैल्यूएशन करते समय नंबर भी कम आ गए तो भी उसको फेल नहीं करना है, तो हम वो थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा सीसी ही फेल हो गया. सो मॉनिटरिंग सिस्टम must be very very much strong, and on the basis of monitoring we can control various things, and then manage the conflicts and manage the time, manage the needs and requirement, not only for the students but also for the faculty members. So this is what the leadership is actually, I feel, to discuss here at this platform, because several community initiated projects having come to a grinding lack of leadership and other managerial skills. So what these other managerial skills are? These other managerial skills are very much related
to this planning and organizing, directing, controlling, budgeting, and all that. So they need to understand, and we also need to understand that leaders performs uh, various roles like planning and then implementing the thing. The most of the important thing is not only to plan at the table on the table, but also to implement it at a very ground level. And we recognize that leadership is necessary for efficiency, but because of our egalitarian tradition, we are uncomfortable with any suggestions of superiority. So we need to think of that. Like, if yes, of course, if we are somebody is giving suggestion to me, then definitely we have to help the person out to implement or to execute actually what they are doing. Say this National Education Policy 2020 came, and every leader is supposed to implement, and we are implementing. Like, Government of India says implement, Minister of Education is also saying to implement, and then the leaders of the school, I mean school principal or the vice chancellor of the university, they are implementing their area. लेकिन जो ground level के workers हैं, like हम teacher जैसे, हम कहते नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना? क्योंकि हमारी एक अपना पुराना ट्रेडिशन चल रहा है, उस ट्रेडिशन के हिसाब से हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है ना बदलने की, या एक ही काम को लगातार करने की हमारी एक आदत बन गई है। जैसे कि कभी कभी छुट्टी के दिन मैं इधर कैंपस में ही रहती हूँ, अगर छुट्टी के दिन कई बार मैं एक आधा घंटा ऑफिस खोल आती हूँ, आदत पड़ गई है, क्योंकि उस दिन तो छुट्टी है ना, तो खोलना नहीं चाहिए, फिर भी खोल लेते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो डिपार्टमेंट में आके बैठ जाते हैं और अपना रिसर्च का काम करते हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ theories about the leadership, and each theory focuses on the different aspects of human behavior and provides useful insights into what makes a good leader. And if we learn that what makes a good leader from the book, then certainly we may or we may not be a good leader. Because if we take our experiences, when I was working at a very ground level as a faculty member, and then through that experiences I plan and I execute the things in a proper manner, then only I can be a good leader. By reading all these things I cannot be a good leader. लेकिन ये सारे लेक्चर सुनने से भी आप एक अच्छे लीडर बनेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये मेरा एक व्यू है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी कुछ कुछ साथ साथ शेयर कर रही हूँ आपसे. So leadership is something viewed as a headship, as in a formal position such as like chairperson or director or a principal. So here we are specifically talking about the school principals. The person who lacks leadership skills may still be appointed to such position. Actually, these courses may be made for them. लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि इसके अंदर ये स्किल्स नहीं हैं? बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, बाय वर्च्यू ऑफ नॉलेज, sometimes we give certain positions, and by interest of the people. There are many examples, like there are one person who is there in the university system and he don't want to be head of the department at all, और हर बार लिख के दे देते हैं मुझे नहीं बनना, क्योंकि उनका मेन इंटरेस्ट एरिया जो है रिसर्च का है. ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाना नहीं आता, वो हेड नहीं बनना चाहते, उनको काम नहीं करना आता, उनको बहुत अच्छे से काम करना आता है, लेकिन वो अपने रिसर्च में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं. तो इस तरह की भी चीजें आती हैं हमारे सामने कि हम किसी ऐसे को भी लीडर बना देते हैं जो कि उस लीडरशिप को करने के मूड में कम होता है, या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अवेल करने के मूड में कम होता है, लेकिन उसको जब बना दिया जाता है, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस, देन everyone has to take care of it. So leadership has been defined as a process of influencing activities of an individual or a group in efforts towards the achievement of a goal in a given situation. So what this given situation is actually, we really don't know what this given situation is actually. So school leadership, sometimes somewhere it is written also as a educational leadership. So educational leadership or a school leadership is more or less the same thing, which is a process of enlisting and guiding the
talent and energize of a teachers, students and parents. सो एक स्कूल लीडर को यानी स्कूल प्रिंसिपल को कितने लोगों के साथ काम करना पड़ता है? उसको स्टूडेंट्स के साथ काम करना पड़ता है, उसको टीचिंग्स के साथ, टीचर्स के साथ करना पड़ता है, नॉन टीचर्स के साथ करना पड़ता है, जो अपने ऑफिस स्टाफ है उनके साथ। उसके बाद उसको हाउस कीपिंग स्टाफ के साथ वर्क करना पड़ता है, उसको पेरेंट्स के साथ वर्क करना पड़ता है, उसको कम्युनिटी के साथ वर्क करना पड़ता है। सो देयर आर सो मेनी कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज which can be reflect the popularity of a school। जैसे कम्युनिटी में हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि किस कम्युनिटी में हमारा स्कूल है। एक्चुअली say my university is in a village, so I have to look forward the village। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विलेज में जाते हैं, बच्चों को हम लोग फ्री ट्यूशंस भी देते हैं। स्कूल के बच्चे जो हैं वो कभी कभी यूनिवर्सिटी आ जाते हैं एक फिक्स टाइम में, शाम को 6 बजे 5 बजे, और उनको फ्री में ट्यूशंस भी देते हैं क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है और वो पे भी नहीं करना चाहते। मतलब समटाइम्स इट इज नॉट हैपन कि गांव है तो उनको पेइंग कैपेसिटी नहीं है, दे हैव अ पेइंग कैपेसिटी मोर देन वी पीपल समटाइम्स, सम ऑफ द पीपल। लेकिन एक एक हमारी इंटेंशन होती है कि हम इस चीज के लिए पे करें। सो एडिशनल टीचिंग हम उन्हें देते हैं। हम कभी कभी गांव के स्कूल्स के बच्चों को कंप्यूटर लैब अपनी दिखाने लाते। वी हैव अ रिच कंप्यूटर लैब, 80 computers in one room, in one hall। So we sometimes invite school students so that they can also see what kind of system is there in the university and what kind of a computer lab is there, or what is computer actually. The first time when I have invited, I think 3-4 years back before corona, first time I invite the school students, तो वो क्लास 9th के बच्चे थे और उनको सिस्टम खोलने में भी बहुत डर लग रहा था एक्चुअली। सो डर लगना क्या होता है, उनको लग रहा था कि कहीं खराब। तो मैंने उनको बताया कि आप कीबोर्ड में कुछ भी ऑन करोगे, कोई भी बटन दबाओगे तो कुछ भी नहीं गड़बड़ होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो गड़बड़ होगी, सेटिंग्स में जाएंगे तो गड़बड़ होगी। और ऐसे तो छूना, उनको माउस टच करना, माउस के ऊपर कमांड रखना, मतलब ये बहुत छोटी सी चीज है कि हम इस माउस को पकड़ रहे हैं तो इसके ऊपर हमारा एक कमांड होना चाहिए। तो वो ही उनको नहीं पता, दे आर इन क्लास 9th, ऑल्दो दे आर वेरी मच एक्वेंट विद द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में वो बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करना जानते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि लीडर का क्या रोल है और कम्युनिटी से किस तरह से वो कनेक्टेड रहे। जैसे मेरे लेक्चर शुरू होने से पहले आई वाज हियरिंग द डिस्कशन विद द प्रीवियस स्पीकर, द डॉक्टर रजनी वाज टेलिंग कि इंक्लूसिव एजुकेशन में मोटिव क्या होता है। हम किस तरह के स्टूडेंट्स को हम टॉपर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमारा मोटिव मेन होता है कि हम उसे मेन स्ट्रीम में ले आए ताकि वो एक इज्जतदार सोसाइटी में इज्जत से रह सके और अपने लाइवलीहुड को खुद ही अर्न कर सके। तो एक रेस्पेक्टेबल सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल प्लेस लाने के लिए यानी उसको हम मेन स्ट्रीम में लाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई देखेगा अच्छा इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है और ये तो हमारे पैसों पे पड़ा है, नहीं। इसीलिए बहुत सारे स्पेशल चिल्ड्रंस जो हैं, जो स्पेशल स्कूल्स में चले जाते हैं, तो उनको थियोरिटिकल कम बताकर उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताते हैं। केक कैसे बनाना है, ये माला पहने हैं तो इसके बीड्स को जोड़ना, हैंडमेड काम उनको बहुत ज्यादा सिखाया जाता है ताकि वो हैंडमेड चीजों को बनाए, मार्केट में सेल करें। और वो खुद नहीं सेल कर सकते तो उनके साथ में कोई ना कोई अटैचमेंट्स अटैच करते हैं, या फैमिली मेंबर भी अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो या कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स कैसे लेना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ एंड दे कैन ऑल्सो फील दैट यस हमारी सोसाइटी ऐसी है ना। अगर कोई अर्न नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, तो हम सोचेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम उसको ऐसे बहुत नकारा टाइप वर्ड हम उसको लिए यूज कर रहे हैं कि वो ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे तो लेडीज के लिए भी जो हाउस वाइफ्स होते हैं, हाउस वाइफ वर्ड यूज करते हैं, घर के पत्नी थोड़ी है, शी इज अ हाउस मेकर एंड शी इज वर्किंग एट अ होम। सो इफ nobody is paying to that lady, then we just say ये करते ही क्या काम है, या घर का काम होता ही कितना है, बहुत कम होता है, जो कि आराम से क्या कर लिया जाता है, और इट इज अ वेरी मच अनस्किल्ड काइंड ऑफ वर्क। So the role of a leader is to connect with the society, actually with the society. So
डे बाय डे नए नए चीजें हमको सीखना है, हमको अपने सोसाइटी के लिए बताना है। तो हम कैसे बनाएंगे? हमारी सोसाइटी के दो ही तो लोग हैं, जहाँ पे हमारी कॉलेज है या स्कूल है, और हमारे स्टूडेंट्स। क्योंकि स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी में तो बच्चे पूरे इंडिया से आते हैं, लेकिन स्कूल के बच्चे तो अपने नियर बाई सोसाइटी से ही आते हैं। सो वॉट एवर यू टीच, वॉट एवर यू मेक देम लर्न, दे आर लर्निंग ओनली and giving the same thing whatever they have learned to their society only, no one else. So ये मैंने ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन में बनाया है. This is leadership excellence, how a person or how the principal is supposed to be a good leader if he is having all these attributes in him, like communication, good communication होना चाहिए, planning and vision, प्लान करना चाहिए उसको, innovation and change means suppose there is a certain kind of a system which is moving, like every teacher, पहले ऐसा होता था हर टीचर बैठ के पढ़ाता था, आचार्य भी ऐसे ही होते थे ना, नीचे बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल क्लास है तो वो उठ भी जाते थे, खड़े होते थे, ग्राउंड में जाते थे, लैब में जाते थे और खड़े रह के पढ़ाते थे. फिर एक टाइम ऐसा है कि नहीं नहीं, टीचर को खड़े ही होके पढ़ाना है, भले ही उसकी तबीयत खराब हो जाए, भले ही वो फेंट हो जाए, पर उसको खड़े होके पढ़ाना है. फिर एक टाइम आया कि खड़े भी हो सकते हो, बैठ भी सकते हो. छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे इनोवेशन एंड चेंज मीन्स छोटी छोटी सी चीजें हैं कि हम अपने स्टूडेंट को कैसे अधिक से अधिक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाए. लाइक सम टीचर्स आर सेइंग दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच 40 or 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास with 40 and 50 students in a class with interaction with all the children. So how to make that class interactive? It is not, it is a misconception that teacher can talk one to one, but we can make certain group. मेरे लाइन में जो बच्चे बैठे हैं वो एक ग्रुप में हो गए, यानी कि ये 4 बच्चे एक ग्रुप में हो गए, फिर दूसरे 4 एक ग्रुप में हो गए, चौथे 4, they can also interact, and then one person from that group can represent the whole class, and this could be repeated also. This time this person A is delivering the things, then next time person B will deliver the things, third time the person C will deliver the things. So this kind of small changes can be made into the class so that every student can learn whatever the teacher is teaching. We used to say कि हमने तो अपनी क्लास में सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाया, अभी एक फर्स्ट आ गया, एक के जॉब लग गई, बाकी को तो हमने अच्छा नहीं पढ़ाया, ऐसा तो नहीं हो सकता. But it is not like that actually. Some students are learning in the school and they are learning at a home also. Here the environment of a home also matters. And some are learning, studying in a class and working after the school time. कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं टू अर्न मनी, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो घर जाकर के घर का सारा काम करना होता है उन्हें, स्पेशली गर्ल्स. लेकिन बॉयज भी ऐसे होते हैं जिन्हें घर का बहुत, तो घर में पढ़ नहीं पाते. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं इसको एक्स्ट्रा ट्यूशन कोचिंग कुछ लगा दिया जाए, लेकिन सबके पेरेंट्स नहीं सोचते. सो द पर्सन, द चाइल्ड हु इज गेटिंग मोर अटेंशन नॉट ओनली इन द क्लास बट ऑल्सो एट देयर होम may do better. So we cannot think of that, yes, we are teaching commonly in the class, so one has got good job, good marks, and another is not getting the good marks, so the another person is weak in their subject. The another person may also excel in the subject if get some opportunity. हाँ, सब कुछ तो बराबर नहीं हो सकता है किसी, इसीलिए individual differences are there. Some are good in practice, some are good in theory, some are good in research, some are good in business, some wants to do only job, some wants to do government job, ऐसा भी होता है. So innovation and change must be there. Relationship and power, where to use our relationship, where to use our power. Say you yourself is inviting many of the people at your school for many of the purposes, and you are inviting only to them to whom you know actually, and to whom you have a good relations.
गुड रिलेशंस मतलब एकेडमिक रिलेशंस, आपके एक अच्छे रिलेशंस बन गए हैं, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि आपने जिसको बुलाया है वो एक अच्छा लेक्चर देगा ही देगा, वो प्रैक्टिकल सभी के साथ जस्टिफाई करेगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स ऐसे आ जाते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स को इक्वल टाइम नहीं देते हैं, वो पहले वाले बच्चों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर टाइम कम पड़ता है तो थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं। बट दिस इज a quality of a teacher, that if the teacher should take the practical exam or viva voice of 40 students, giving the equal time and equal opportunity to the child to respond actually. So this is what the relationship and power is there. And sometimes the relatives are also working in the same place. So the workplace is a workplace, and another friendship is another thing. Then next is courage and risk. You need to be a risk oriented. अगर आप हैं तो it's always good. If you are not a risk oriented, then of course you are not able to do some new innovations, new practices, and then at the time decision making may be late if you are not taking. On the spot decision is required when you are dealing the students. When student come to you, then you have to think of that. We do have a in the very next week we have one we have invited the CBSE principals in our university, and there is a workshop of 2 days. So on the same day, but we have scheduled fresher party also of the students. So now when they came with the schedule, then I told them that अरे यार ये तो उस दिन तो प्रिंसिपल्स मीट भी है। देन कहते कहते ही मेरे एक और डिसीजन लिया कि क्योंकि बच्चों का मायूस सा चेहरा देखा मैंने, तो मैंने कहा नहीं नहीं, we can make a duty chart of a teachers, and when some of the teachers will stay in the workshop, and we can keep on rolling mode, the another will stay with the students, and in between also we can change our duty and change our places also. So that is called like decision making. Then and there we have to take the decision if we are concerning with the students, and it is very essential for each and every person to take then and there decision. Coaching development, ये भी एक system चला हुआ है coaching का. Coaching means extra classes here. So the person who are weak or required some remedial classes may get some kind of coaching classes or remedial classes also, you can say, in the school or after school time. In the school, but after school time. Self management, leader should manage its own work. If sometimes I have seen in some of the schools, and which is one of the good practice, and which I also have adopted, but in a different manner I have adopted, that some of the school principals are putting a blackboard or a white marker board in their room, and they just listed down the activities of that particular semester, so that they can manage themselves, so that they can follow up with all that thing, so that they could come to know that yes, this is there actually. This is the month where we have to do the another thing. So these are some of the bases of for a successful leadership, and setting of the direction. Out of all the discussions, I have clubbed it here, that setting of the direction, developing people. No, people here means developing the faculty by sending them to the faculty orientation. You know, एक faculty अगर पूरे दिन सालों साल स्कूल आते रहे और उसको कहीं का भी एक्सपोजर के लिए उसको ड्यूटी लीव ना मिले, तो वो कितना फ्रस्ट्रेशन में ही आ जाएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं मिल रहा है। तो रोटेशन में हमें हर फैकल्टी को भेजना चाहिए। कल कई फैकल्टी सोचती है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आलस कर जाते हैं कि वो अप्लाई नहीं करते। इट इज ऑलवेज लाइक सेल्फ मोटिवेटेड, एंड सेल्फ से जो फैकल्टी है वो अप्लाई करती है, तो उसको हम कहते हैं कि उसने ओरिएंटेशन अप्लाई किया इसलिए हमने उसे चांस दिया। बट देयर आर सम ऑफ द फैकल्टीज हु डू नॉट अप्लाई, सो दिस इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर to send them also, or to motivate them also for the external exposures. When we move outside and we meet different people, then we get certain different kind of exposures.
There is some organizational context. Student population also matter. Say you do have 3,000 4,000 students in your school, and I'm having only 350 students in my department, but still I'm saying कि बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हैं, तो हमारी डिस्कशन, हमारी हैंडलिंग, हमारी डीलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है उनके साथ में. रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है, तो हमारी हैंडलिंग डिफरेंट होती है, एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट दिस इज अ बिग डिपार्टमेंट. नॉट ओनली मी बट अदर्स आल्सो थिंक ऑफ. So then the policy context, I mean, every leader is supposed to be a part of a policy making, like creating and sustaining a competitive schools. This is the first need and requirement. Like every private school is always on toes for a competition to grab more and more students in their school, even if they do not have good infrastructure and good other things, learning material and other things. So now government school principal is also have to be in a competitive mood, so that all the students from their nearby area need not to go to any other school, irrespective of any of the government school or a private school, and they can get attention of that particular student in their school. And some of the schools, जैसे private schools हैं, मैंने उनका देखा, government schools का भी देखा है. One of my sister is cousin sister is teaching in one of the school. So वो क्या करते हैं, हालांकि दिल्ली के तो अब में ज्यादा, तो इधर अर्बन सिटी है, आई मीन कैपिटल ऑफ द कंट्री है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं स्कूल में. तो वो उनके घर घर जाके, छुट्टियों में उनका यही काम होता है कि वो घर घर जाके डाटा इकट्ठा कर दे कि कौन स्कूल आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, एंड देन दे मोटिवेटेड ऑल्सो कि नहीं आना है, आना है, आना है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, मतलब जब तक वो स्कूल नहीं पहुंच जाता उसको मोटिवेट करते ही रहती है लगातार. तो दिस इज लाइक व्हाट the way they are adopted. There are two things. First is you have to showcase your school in a very good manner. Showcase का मतलब बहुत सारे flag posters ये सब लगाना नहीं है, but to give good education, the education which helps the child in a future. Seenable education and visible, दिखाई देने वाली हो knowledge, and providing instructional guidance, developing and implementing strategic and school improvement plans. So these are the basics of successful leadership when the leader is supposed to be a successful. Leadership influences students achievement. ये तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि एक दो ही चीज की जरूरत होती है, उसका अचीवमेंट यानी कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, और वो कहीं कोई स्किल सीख सके, उसको कोई अच्छी जॉब मिल सके. So mostly leaders contribute to students learning indirectly because they are not going to their classes actually, through their influence on other people or features of their organization. I mean, they are influencing the students through their teachers, through their faculty members. And the evidence provides a very good clues about who and what educational leaders should pay the most attention to within their organization. We need to know much more about what leaders do to further develop those high priority parts of their organization. अभी एक ऐसा भी चलता है सिस्टम कि हर यूनिवर्सिटी को किसी एक ना एक एरिया में एक्सेल करना है, so that the sharing of resources can be applicable. In the same way, बात करते करते मुझे आइडिया है कि every school must have must identify certain kind of activity which, and in that particular activity the school can excel in it. जैसे कोई स्कूल है वो हेल्थ एंड हाइजीन पे ध्यान दे, तो हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड प्रोग्राम्स ही ना कराए, बट वो एक पेस सेटिंग बने अपने एरिया का कि उसके स्कूल के बच्चे कभी बीमार ना पड़े, उसके स्कूल के टीचर्स कभी बीमार ना पड़े, उसके स्कूल में अगर मिड डे मील भी चल रहा है तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्वालिटी ओरिएंटेड है या नहीं है. ऐसा ना हो कि वो खाया ही ना जा सके, या तो किसी भी एक एरिया में भी आप एक्सेल कर सकते हैं ताकि आपका स्कूल ब्रांड नेम बने. कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं ना, वहां का एक बच्चा है क्रिकेटर निकल गया, बन गया, तो अब उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे फैसिलिटीज डेवलप कर लिए. उन्होंने सोचा हम स्पोर्ट्स में ही एक्सेल करते हैं, चलो
So this can also be done. एक और लास्ट स्लाइड बचे हैं, हाउ लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स लर्निंग. स्टूडेंट्स के लर्निंग को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस व्हिच आई हैव रिटन, दैट व्हाट इफेक्ट डज अ सक्सेसफुल लीडर हैव ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग. क्या एक लीडर इफेक्ट छोड़ता है बच्चे के ऊपर जिससे कि उसकी जो लर्निंग है वो अच्छी हो सके. How should the competitive forms of leadership visible in the literature be reconciled? Is there a common set of basic leadership practices used by a successful leader in most of the circumstances? What kind of most of the circumstances? Student unrest is one circumstance which is there in every school, which may be there in every school, which may be there in every university. Student unrest. लेकिन the reason may be changed. अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं. हमारा सर्कमस्टेंस तो सेम है, स्टूडेंट अनरेस्ट, लेकिन उसका रीजन बदल सकता है. फिर आपका स्कूल किस जगह पे सिचुएटेड है, सिटी में है. जैसे मैं एक कॉलेज में मैंने जॉब किया था, तो वहां पर बिल्कुल हाईवे के पास ही था, वहां पे ट्रक्स भी चलते थे. तो जब सुबह के समय में मैं मेरे पीएन को खड़ा कर देती गेट में कि रोड के पास खड़े हो, और अगर किसी भी बच्चे को रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है तो वो अंदर आए. यूजुअली इट हैपेंस दैट व्हेन student comes late to the college, then they run. तो और छुट्टी के टाइम में भी मैं उसको बोलते थे कि खड़े होके जाओ वहां पे, तो किसी को दिक्कत है रोड क्रॉस करने के लिए तो वो रोड उसको क्रॉस कराएगा. क्योंकि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, मे बी द नॉर्मल, मे बी द गर्ल्स, मे बी द person who are ill, differently able children. So he just helped them out. So this is the duty so every time the situation is different, every time the problems are different, but every time the problem which is related to the student problem is same. I mean, the person is same, but the problem is different. So these are the things which I could discuss here, and this is really a good practice to have a leadership. Recently, I have attended one program, Leadership for Academician, which is being sponsored by Ministry of Education, and Ministry of Education has given me 3 weeks training. So 2 weeks training I have taken in uh, 2 weeks training I've taken in ISER Calcutta, and then 1 week training at Singapore. So recently I came from there, and it was then on 15th of August 2022. So when I went there, the idea of the government of India was that they are sending the leaders, those who are in the position to become a leader, and who are in the position who are actually holding the post of a leader, and they should know that how the other institutions are working. So when I'm talking this on online mode, of course you maybe learn something, but through my body language, through my gesture, through the effect of the expression which I'm giving while telling you, you can learn only in an offline mode. So they have sent for the training purpose in one of the foreign university, and the ISEL Calcutta has selected Singapore as a foreign university. And when I went there, I have seen that so many things are there which I cannot learn by seeing. I'm learning, but if I didn't went there through lectures, I cannot learn anything. जैसे एक छोटे से ही बात है कि सिंगापुर में कुछ भी वेजिटेशन नहीं है, मतलब फूड ग्रेन्स नहीं होते हैं. एंड सिंगापुर वाज अ पार्ट ऑफ मलेशिया एक्चुअली. फिर वो आजाद हो गया, अलग हो गया. एक्चुअली वो अलग नहीं होना चाहता था, फिर भी हो गया, होना पड़ा उसको. तो वहां पे वेजिटेशन नाम की कोई भी चीज नहीं है. सो दे हैव डिसाइडेड इनिशियली, this was the role of a leader, I mean the president of that particular country, that they have decided that why not to showcase our country as a tourist place. So every place, every roadside, every building is prepared, is made in such a manner that you want to take a click or a pic of that particular place. So
this was their idea. But during the COVID time they realized कि भाई अपना भी food grain होना चाहिए, अपना भी होना. Now they have started working in growing or in the side of an agriculture. एक second. सो वो एग्रीकल्चर को अब प्रमोट करने लग रहे हैं धीरे धीरे. अर्लियर देयर आइडिया वाज टू अर्न मनी बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अ मनी दे कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द other countries. But during the corona time they learned this thing, so now they have started doing or started growing some of the vegetations or certain this kind of practices also. So you can see that how different places people are working, how different places people are moving, how they are interacting to each other. I've seen a different kind of a culture. That country is quite safe, and most of the film stars was children are studying there, which I could see in that particular university. Because in our country sometimes they are spending a lot of money, but the safety, the security which is there, they may not be finding it in our country. So it is not that our country is not good in many of the aspects, but our country is also good, but that country is also has put a kind of a brand name in them. So we need to learn many things from them, many things from that particular place. अभी भी तो दिल्ली गवर्नमेंट अपने स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड भेजती है सीखने के लिए. तो पार्लियामेंट में इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस है कि भाई वो फिनलैंड क्यों भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे. सो देयर इज अनदर काइंड ऑफ अ डिबेट ऑन इट. बट एक्चुअली व्हेन वी सी वी लर्न मोर. व्हेन वी लिसन ओनली इन एन ऑनलाइन मोड देन वी लर्न ऑफ कोर्स मोर. बट समटाइम्स जैसे हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं ना, so that could be a kind of a practical. So with these words I really would like to appreciate uh, and thankful to Dr. Rajni and the SCRT Haryana who has given me this opportunity to speak on the leadership, effective leadership on school, on students learning. Because leadership, the role of a leadership is to to make student excel in their teaching learning process, and as well as after leaving the school they could get some good job, or maybe they can get some place to study high in a higher education system of their choicest place. मतलब जहां वो चाहते हैं वो वहां जा सके. एक्चुअली ऐसा ना हो कि वो जाना तो कहीं और चाहते हो लेकिन जा ना सके वहां पर, और एक लेफ्ट ओवर प्लेस में, एक लेफ्ट ओवर स्ट्रीम में ही रुक सके. एंड ऑल्सो the role of a leader is to make student not only the student but also their parents, ki what is the choice of a student, what is the interest area of a student. There are more than a 600 vocational skills being identified by CBSE. CBSE का आप एक बुकलेट देखिए, वोकेशनल स्किल के ऊपर लिखा हुआ 600 से भी ज्यादा वोकेशनल स्किल्स उस मैनुअल में दिए हुए हैं. तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ जा सकता है. जैसे मुझे पता है कि अगर इंजीनियरिंग में अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्किल्स भी हैं जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर के आप जा सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. किसी को कुछ भी शेयर करना हो या डिस्कशन करना हो तो वो मुझसे कर सकते हैं. वीना वासुदेवा मैम, डाइट पाली से आपका माइक ऑन है. आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम? नहीं मैम. ओके, एनीबडी? किसी को नहीं पूछना है तो कोई अपनी बेस्ट प्रैक्टिस भी शेयर कर सकता है, सो दैट आई कैन आल्सो लर्न एंड अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो लर्न. कभी कभी हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं शो करते ताकि कोई दूसरा को स्कूल वाला चीट ना कर ले, उसको कॉपी ना कर ले. पर व्हेन यू शेयर योर बेस्ट प्रैक्टिस certainly you will automatically get some new idea in that particular best practice. So if anyone feels good, then can share the best practice. Yes, we can share. Dr. Jagmahinder Singh ji, sir, आपका माइक अनम्यूट है. Would you like to share any best practice? मैम हमने ना
हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, डॉक्टर जग महेंद्र जी। हेलो हाँ जी सर, बताइए। मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ हाँ, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाटरत में था। तो उस टाइम हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, तो उस टाइम जो एसडीएम थे आईएएस आनंद शर्मा जी, जी और आईपीएस ऑफिसर्स थे, उनको स्पेशली बुलाया था। और उन्होंने बच्चों को, खास तौर पर जो गर्ल्स है ना, उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी थी किस प्रकार से हम जो बच्चे हैं आगे क्या कर सकते हैं। आप जी सर। सर हाँ जी सर। तो उससे वो बड़ा इफेक्टिव रहा था मैम। हाँ जी सर। बच्चे आमतौर पे ऐसे फील्ड होते हैं, कई बार बच्चों को, उनको पता ही नहीं होता हम उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, हम कैसे उसकी प्रिपरेशन करें। और खास तौर पर जो ऐसे जो पर्सनैलिटीज हैं, जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हमारे स्कूल के अंदर जब आते हैं, तो वो प्रैक्टिस बड़ी बड़ी इफेक्टिव रही। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो इस सच में प्रकार ये के भी भी एक हम अच्छा जेस्चर है कि अगर हम किसी पर्सन को अपने यहाँ बुलाते हैं, किसी सीनियर पर्सन को, या जैसे अगर आपके यहाँ स्पोर्ट्स मीट है तो आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाएं, या एनसीसी एनएसएस के थ्रू भी आप बुला सकते हैं। उससे स्टूडेंट ना बड़े मोटिवेटेड होते हैं। स्टूडेंट इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी हु आर ऑलवेज रेडी टू मोटिवेट नहीं, देमसेल्फ। उनको और एक उनको पता आइडियल स्टूडेंट्स एक आइडियल भी मानते हैं। जब से बत्ती लगी गाड़ी पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर स्कूल के अंदर आता है, तो उनको होता भी है भाई हम भी कभी इन जैसा बन के दिखाएं, इन जैसा बन बने। के दिखाएंगे, हाँ और जी उनको लगेगा कि वो भी बहुत आम इंसान ही है और वो हमारी जी तरह जी। ही रहे होंगे कभी। यस। तो हम बच्चों के साथ बिल्कुल नजदीक जाकर उन्होंने जब कम्युनिकेशन किया, तो बहुत सारा उनको मोटिवेशन मिला बच्चों को। ये भी एक Sir, अच्छा। thank you. You shared. Anybody else who want to share any of the best practice? थैंक Thank you, sir. Thank you. So, on behalf of School Leadership Academy, our head of the department, Sri Ram Kishore Punia ji, and our respected director, Sri Mahavir ji, I would like to present vote of thanks to Professor Sarika. Ma'am, we are so fortunate and thankful to you that you spare some time for our participants, and it was really a informative and motivating session. So thank you so much, and we look forward for more such collaborations and request you to spare such time in future also. So thank you so much, ma'am. थैंक यू। Thank you. And thank you all the participants. अभी के लिए अभी बहुत कम हो चुके हैं, which I was observing. So कल 10 बजे, कल तो हम 10 o'clock ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हाँ, टाइम में कोई भी चेंजेस होगा, या कोई भी, जैसा कि सुबह सजेशन आया था, हेड सर ने भी सुन लिया, अगर ऐसी कोई लाइक उसमें चेंज होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पार्टिसिपेंट्स। मॉर्निंग में है। अभी के लिए we are ending the meeting now. Link will be the same for tomorrow, and I will share it again with you people. व्हाट्सएप किया Thank था you. उसी समय कैसे